Hi, good evening, everyone, and I welcome you all to this very interesting session today on India at 100. And for this very interesting session, आज हमारे साथ है रामदेव अग्रवाल जी, who basically requires no introduction, but for all our viewers, जो आज काफी लोग शायद नए हैं, and a lot of investors today, so I will formally introduce Ramdev sir. तो रामदेव जी की अगर हम बात करें तो he has been the founder along with Motilal ji for the group, and he's been a driving force behind the company's approach to investing. 1987 में इस कंपनी की स्थापना हुई है, एंड इट इज अ वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो जिनका फोकस ज्यादातर इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट्स और रिसर्च पे है. रामदेव जी अपनी असेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन है, एंड ही इज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन फ्रेमिंग द QGLP investment framework. A lot of people may not know what QGLP is, but it stands for quality, growth, longevity at a favorable price. And he's also responsible and in formulating the investing formula philosophy of buy right, sit tight. Randeji is an associate of Indian Institute of Chartered Accountant of India, and is also the member of the National Committee on Capital Markets of Confederation of Indian Industry. Ramdev has been awarded the Rashtriya Samman Patra by the Central Board of Direct Taxes on consistent track record of highest integrity. So we have with us today a very iconic personality when it comes to investing, and that's Ramdev sir for all of you. Sir, the stage is all yours. Over to you, sir. Okay. Thank you very much, and good afternoon to all the viewers and all the associates of NJ. And it will be my pleasure to speak to you on a subject India at 75 or India at 100, whatever we might call it. I think we call it India at 100. So this is a study which we conducted to commemorate the occasion of India at 75. And so these are a few thoughts of what India has gone through in 75 years. Because if you want to understand the future of any country or any company, I think what you should know is what has been the past and what has been the journey, and this continued journey where it can go, it will. So it can where it can go, and some of the possibilities we have tried to look through, and through the prism of the past. So I would switch on the presentation of mine, and from there we'll take it. So India at 100, compounded past, compounded future. India's story is a story of compounding in the last 75 years. Silently, the country has been growing from a absolute what you call basket case in 1947. I would say till over 80s, India was like 95% of the population was below poverty line. So I think it has been a tremendous journey of 75 years. Once we understand that, then we can try to project into the future, and some of the thoughts of mine and our team has been put up here. And after that, we'll take a few questions. So inside on compounding is the eighth wonder of the world, and compounding is not intuitive. What happens is that compounding sounds to be very few people understand, and of the few, very few practice. That's the power of that's the rarity of the compounding, though it is one of the very, very simple concept. Compounding is not intuitive. Long-term compounding is almost unimaginable. What happens is that when we talk about 5 years, 10 years, you can understand, okay, 25% in 10 years will go 10x. But when you talk about 70 years, 60 years, I mean, it becomes unimaginable. But that's what really happens. तो इसमें होता यह है कि जो लंबे समय का जो कंपाउंडिंग होता है उसके लिए समझ की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा. यदि मैं आपको बोलूं कि 10 साल में 10 गुना होता है तो 30 साल में कितना होता है, तो कोई लोग बोलेंगे 70, 75, 80, बट एक्चुअली 30 साल में वो 1000 गुना होता है. तो वो ये चीज़ जो है जब तक आप समझे नहीं लॉन्ग टर्म, तो कंपाउंडिंग का पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जितना लंबा आप लेके जाए उतना ज़्यादा पावरफुल होता है. तो ये एक कंसेप्ट है जिसके कारण से वॉरेन बफेट साहब, इनको बहुत पहले समझ में आ गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
और उनका करीब 45 साल की उम्र में उनके पास $1 लाख था और आज 200-300 बिलियन डॉलर के मालिक है वो। और उनका रिटर्न जो है सिर्फ 20% के हिसाब से हुआ है, लेकिन 65 ईयर्स के लिए। 20% आप सब लोग कमाते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल कमाते हैं, वो 65 ईयर्स से डॉलर में कमाए। उसी कारण से आज वो इतने फेमस हैं और इतने बड़े आदमी हैं। सो ये कंपाउंडिंग का टेबल है। यदि आप 25 साल की 75 साल की बात करें तो 7.5% से 227 गुना होता है, 10% से 1272 गुना होता है। तो ये जो टेबल है, ये हमने इस ढंग से चुना है कि कोई कंट्री की कहानी का बात कर रहे हैं तो बहुत लंबे की बात करनी पड़ेगी। तो ये हिसाब से आप देखिए कि जैसे आप 5% से करते हैं 75 साल के लिए तो 39 गुना होता है, 7.5% से 227 गुना होता है और 10% से 1200 गुना होता है। तो ये कहानी जो पीछे हुई है और ये कहानी आगे चलती रहेगी। सो इंडिया कंपाउंडेड पास्ट, कंपाउंडेड फ्यूचर। सो कोई भी चीज़ के लिए आगे के लिए बात करने का मतलब प्रेडिक्शन करना अपने आप में डेंजरस है, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, ऑल अबाउट एंटिसिपेशन, ऑल अबाउट एक्सट्रापोलेशन। सो स्टॉक मार्केट में बिना फ्यूचर देखे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसका तरीका क्या है समझने का? एक ही तरीका है कि आप पीछे देखें। आई हैव one lamp by which my feet are guided, and that is a lamp of experience. I know of no way to judge the future but by the past. तो जब तक आपको पुराना नहीं मालूम रहेगा तब तक आप फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर सकते। तो वही टेक्निक हम यहाँ भी लगा रहे हैं। सो इंडिया 50 to 75 कंपाउंडेड पास्ट ऑफ 25 ईयर्स। बेसिकली डेटा सीरीज जो है, जितने भी वर्थवाइल डेटा है कंट्री के ऊपर या कंपनी के ऊपर, जनरली डेटा रेवोल्यूशन चालू हुआ है 90s से। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बिफोर दैट बहुत अच्छा नहीं था। तो हमने सोचा कि ये जो लास्ट 25 साल है उसको हम एनालाइज करें, इंडिया की जर्नी कैसी रही, और फिर 75 से 100 का भी हम बात करेंगे। तो इंडिया एक बहुत बड़े एलिफेंट की तरह है, बहुत स्लोली मूव करता है बट श्योरली मूव करता है एंड वाइजली मूव करता है। तो ये इंडिया इज लाइक एन एलिफेंट। सो धीरे 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 चलते रहेगा, ना तो स्लो होता है बहुत और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट एक स्टडी पेस से चलते रहता है। सो आप देखें द वर्ल्ड हैज मतलब पूरी दुनिया जो है हैज़ बीन वेरी वेरी प्रॉस्परस इन लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल में पूरा विश्व 5% के हिसाब से ग्रो किया है, और जो 32 ट्रिलियन था 96 में वो बढ़ के हो गया 96 ट्रिलियन लास्ट ईयर। इंडिया ने उससे बहुत अच्छा किया, ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रो हुआ है, 9% के हिसाब से ग्रो हुआ है, और जो 400 बिलियन का जो था वो बढ़ के 3.2 ट्रिलियन हो गया है। सो 8x हुआ है करीब 25 साल में। सो ये होता है आपका। सो इंडिया हैज ग्रोन एट 9% कंपाउंडेड। सो लेकिन एक खास बात क्या हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट 5%, इंडिया इज ग्रोइंग एट 9%, तो इंडिया का जो शेयर है वो बढ़ के वो काफ़ी बढ़ गया है इन लास्ट 25 ईयर्स। सो बट वी हैव, लेकिन चाइना ने हमसे बहुत अच्छा किया है। देखिए चाइना ने 25 साल में क्या किया है, 12% से ग्रो किया है। तो चाइना जो है 25 साल में, मतलब समझ लीजिए आप 96 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था इंडिया, उसमें थोड़ा तो बड़ा था चाइना, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। लेकिन आज क्योंकि हमने 9% से ग्रो किए और वो 12% से, तो वो हो गया 17.5 ट्रिलियन और हम रह गए 3.2। तो ये जो गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है, सिर्फ 2-3% के 25 साल के ग्रोथ के कारण से हुआ है। सो कैन इंडिया बी द नेक्स्ट चाइना? मोस्ट इंडिकेटर्स आर फेवरेबल। अब देखिए अभी हर समय, हर कंट्री का, हर कंपनी का, हर आदमी का एक समय आता है जब क्योंकि कई चीज़ें जो है आपके करने से नहीं होती है, एक एनवायरनमेंट जब सही आता है तब जाके होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है पहले अमेरिका हुआ, फिर उसके बाद जापान हुआ, फिर कोरिया हुआ, फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आया चाइना का। तो लास्ट 15, 20, 25 साल में चाइना की कहानी बनी। मुझे ऐसा लग रहा है अगला 10, 15, 20 साल ये इंडिया की कहानी है। और क्यों ऐसा लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या है, देखिए 1947 में इंडिया वाज नथिंग, 51 मतलब समझिए 10, 12, 13 बिलियन का टोटल जीडीपी था, जो बढ़ के 1 ट्रिलियन हुआ 2008 में। तो 60 साल लगा
पहला ट्रिलियन पहुंचने के लिए। तो फिर दूसरा ट्रिलियन हुआ है अगले 8 साल में, जो 60 साल के थे वो 8 साल में हुए। फिर उसका तीसरा ट्रिलियन हुआ, फिर 8 साल लगा क्योंकि कोविड हो गए 2 साल। अब चौथा ट्रिलियन जो है आपका हो जाएगा 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर पक्का हो जाएगा। पांचवा ट्रिलियन होगा 2 साल के अंदर, और फिर छठवां, सातवां, आठवां हर साल ट्रिलियन डॉलर बढ़ते जाएगा। ये जर्नी हुई है सबकी, और ये जर्नी हो ही जाएगी इंडिया के भी। अभी देखते हैं आगे किस स्पीड से होता है, लेकिन चाइना की जर्नी ऐसी है। तो चाइना जो है ट्रिलियन डॉलर बना, जो हम 2008 में बने, चाइना बना 1997 में। और उसके बाद देखिए चाइना कहाँ से कहाँ पहुंचा है। इंडिया की जर्नी शायद उतनी फास्ट ना हो, लेकिन फिर भी इवन एट 9%, 10%, ये जो इंडिया की जर्नी होगी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, क्योंकि अब बेस बहुत बड़ा है। आप यदि 3 ट्रिलियन के ऊपर 8-9% की बात करते हैं डॉलर जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वो आपको समझ लीजिए 200, 250, 300 बिलियन डॉलर का एडिशनल आपका जीडीपी बनता है। उससे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो बहुत अलग होती है। सो देखिए होता क्या है कि लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आपका डबलिंग ऑफ जीडीपी है वो एक्सपोनेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है। तो जो होता क्या है, जब $1000 पर कैपिटल इनकम है तो आपको $900 चला जाता है बेसिक्स में, और $100 बचता है डिस्क्रिशनरी के लिए। सो 10% इज डिस्क्रिशनरी। जब आपका इनकम डबल होता है तो बेसिक रहता है 900 का 900, लेकिन आपका जो डिस्क्रिशनरी है वो 100 का 1100 रहता है। सो डबलिंग ऑफ जीडीपी इज 11x फॉर डिस्क्रिशनरी। लेकिन अलग अलग चीजों के अलग अलग डिस्क्रिशनरी लेवल होता है। जैसे आपका पहले बाइसिकल इकोनॉमी थी, वहां से मोटरसाइकिल इकोनॉमी हुई, अब जो एंट्री लेवल कार इकोनॉमी हो रही है, और उसके बाद फिर लग्जरी कार की बात आएगी। तो ये जो है डिपेंडिंग ऑन पर कैपिटल जीडीपी, ये डिस्क्रिशनरी माहौल बनते जाता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर इंडियन इकोनॉमी में इट विल कीप बिल्डिंग अप एज वी गो फॉरवर्ड। अभी और उससे बड़ा कहानी होगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का। तो पिछले 25 साल में इंडिया ने $12 ट्रिलियन का सेविंग्स किया है, लेकिन और उसी कारण से, लेकिन अगले 25 साल में ये कंट्री इन नॉर्मल वे 100 से 110-120 ट्रिलियन डॉलर सेव करेगा अगले 25 साल में। अब ये जो कहानी है 25 साल की, इसमें जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, आपका जो इंटरमीडिएशन है, सेविंग्स है, आप देख ही रहो क्या हो रहा है। म्यूचुअल फंड सही है, और जो SIP आ रहा है, इससे जो माहौल बन रहा है सेविंग्स का, ये माहौल तो अभी शुरुआत हुई है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो कहानी है इंडिया में, वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी होगा। ठीक है, कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फ्यूचर मुझे नजर आता है। सो व्हाट आर द इंडिया एडवांटेज, व्हाई दिस स्टोरी विल कंटिन्यू। एक तो पहली बात, आपके पास डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स, एंड वेल स्टेप्ड वेरी फेडरल स्ट्रक्चर। इतने सारे 28 स्टेट्स हैं, एंड सेंटर रिलेशनशिप्स दे नीड टू इम्प्रूव, बट स्टिल इट इज अ फंक्शनल फेडरल स्ट्रक्चर। मूविंग टुवर्ड्स वन नेशन आइडिया, हर चीज यहाँ पर एक कोहेसिव है। वन यूनिफाइड मार्केट, वन इनकम टैक्स, वन GST, वन आधार कार्ड, वन राशन कार्ड, वन मोबाइल नंबर, वन बैंक अकाउंट। तो ऐसे हर चीज जो है, और इंटरनेट तो और भी उसके ऊपर से, वन ह्यूज यूनिफाइड मार्केट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, यू कैन मेक इट। Your direct tax and indirect taxes across the country is same. So clearly, it is a unified market of 1.4 billion people, and so this is a very unique one single market of 1.4 billion people. Second, demography. It is the second largest population in the world, and next year most likely it is going to be the largest population in the world, bypassing even China. And it is dominated by youth. I think the real thing is 40% population is below 20 years, and 85% of the population is below 50 years. So it is one of the youngest country. So I think जो एक प्रॉस्परिंग सीन में जो यंग पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत एक्साइटिंग होगा। देन डिजिटाइजेशन, ये एक बहुत यूनिक चीज है फॉर अ पुअर कंट्री टू हैव अ डिजिटल प्रोवेस द वे इंडिया हैज। तो इंडिया का ग्लोबल रेपुटेशन ऑन द बैक ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कैसे बिल्ड हुआ। 2000 में 4 बिलियन का एक्सपोर्ट था, एंड लास्ट ईयर $176 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इस साल कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से $200 बिलियन के ऊपर होगा। सो ये जो इसके कारण से क्या हुआ, जितने भी डिजिटल मॉडल्स हैं, जितने डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं, AI, मशीन लर्निंग, जो भी आगे के काम हो रही है,
वो सब इंडिया में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, पुणे में हो रहा है। सो ये सब बड़े बड़े टेक सेंटर्स बन रहे हैं, और यहाँ से ये बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फॉर अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया टू हैव। डॉलर रिजर्व्स, आई थिंक एक सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंट्री के फ्यूचर में, क्योंकि आपका डोमेस्टिक करेंसी तो आप कितना भी प्रिंट कर लें, लेकिन फॉरेन करेंसी जो आपके एक्सटर्नल ट्रेड के लिए या इंपोर्ट्स के लिए चाहिए, वो चीज़ जो है आपको कहीं बाहर से मिलती नहीं है। और उसी कारण से 1992 में ऑलमोस्ट इंडिया वेंट टू बैंकरप्सी, एंड एक बार बैंकरप्सी होती है तो पूरी कंट्री खत्म हो जाती है। देखिए अभी श्रीलंका का क्या हालत है। तो इंडिया वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। ऑफ कोर्स वी डिडंट डिफॉल्ट इन एनी ऑफ द पेमेंट्स, लेकिन उसके बाद जो है government went about building up reserve, and now we have reserve of at one point of time it was 650 billion, now it is about 550 billion. So this forex reserve is a huge strength of India, particularly in adverse times like this, when the world is turmoil और सब तरह की अनसर्टेनिटी है। ये फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ने यूज किया, और ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन और जितने भी अनसर्टेनिटीज है सब पास हुआ, और डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज बीन completely what I would say protected from the vagaries of the global economy right now, thanks to this forex reserve, and we have ample of it. And I think एक बार ये अनसर्टेनिटी खत्म होगा, वार खत्म होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड का जो सिक्लिकली जो इकोनॉमी रिकवर होगी, उसमें इंडिया विल क्लियरली emerge as a, because strength is how badly you suffered in the bad time, and India has not suffered in bad time, or it has suffered very very minimal. So that shows the strength of the economy. Benign inflation and falling interest rates. I mean, if you see what used to be the interest and inflation rates in the last 20-25 years, that has been clearly now our highest rate is now 7.5% for GSEC, which used to be 10-12% way back in 90s. So even inflation has come down from 10-12% to 5-6%. Stable government in place. I think the stable government has come after 30 years. Otherwise, it used to be coalition government, and this itself is one of the big thing to be talked about. And you have ये जो अभी जो global uncertainty है, उसमें what you need is a salience of stability, and that's where I think Modi government's Mr. Modi's presence itself is a big thing, and his continued presence for at least another 5-6 years is going to be a boon for this country. So what are the implications for Indian capital market? So Nifty can hit 6 lakhs by 2047, compounded future of just 15%. So देखिए last 25 years में Nifty 12% से ग्रो किया है, and it is started at about 1000, and now it is about 18,000. So how Nifty can be 6 lakhs in next 25 years? 12 से 13% nominal GDP growth rate, 6-7% real, and 4-5% inflation. Corporate profit growth marginally higher than GDP growth rate, so that's about 15%. I think sustaining 15% corporate profit will be, but if we do 8% real GDP, our corporate profit will grow at 15% or maybe even higher. But आप सभी को मालूम है कि GDP कुछ 7-8% से हर साल नहीं होने वाला है, कभी 9% भी हो सकता है, बट 5-6 भी हो सकता है, तो ऐसे ऊपर नीचे होगा, लेकिन प्लस माइनस से 2% from 7, between 5 and 9, that's how it will happen. And market grows broadly in line with corporate profit growth. So आपका corporate profit to GDP, which is at about 5%, that can go up to as high as 8-9%. But assuming that corporate profit to GDP remains at 5%, the nominal GDP growth rate will picture in terms of earnings growth for the indices. So we are expecting about 15% corporate profit growth for the next 25 years, which is 33x. So Nifty can go from current 18,000 to some crazy number, which I don't want to even talk about. So what can merely delay and derail the India story? Not derail, but delay the story, because I think something which has lasted for 75 years is going to last for another 25 years with a very high probability, I would say. So what are the risks? One is the inflation risk, which the world is passing through right now.
अभी जो जो महंगाई का जो चल रहा है पूरे विश्व में, वो एक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दुनिया जो है 1-2% से अभी जब 8-9% चल रहा था उनके लिए बहुत तकलीफ है, और उनको 2% लेके आने का है। इंडिया के लिए 5-6% इन्फ्लेशन कोई आउट ऑफ लाइन नहीं है, ये हमेशा ही होता है। सो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, हेल्दी इन्फ्लेशन है। थोड़ा ज़्यादा 1-2% ज़्यादा है, वो कम हो जाएगा, लेकिन हमको 2% आने की जरूरत नहीं है। सो जब दुनिया में 2% होगा तो शायद इंडिया के लिए बहुत बहुत अच्छा समय होगा। मे भी 3-4%, 5% हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा। ग्लोबल शॉक्स जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब कोविड कोविड आया, अभी आपका यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो ये सब ग्लोबल शॉक्स हैं, कुछ भी हो सकता है। और फिर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, और ये इवेंट्स होंगे होंगे कोविड टाइप पे कोई दूसरे इवेंट्स। हम रिस्क लिए देखते हैं कि ताइवान चाइना का लड़ाई हो जाएगा, लेकिन होता कुछ और है। यूक्रेन में लड़ाई हो गई या कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन देर इज अ रिस्क। मैं जितने लिखा हूँ उसमें से, ये तो मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, लेकिन रिस्क वो चीज़ होती है मेरे दिमाग में जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते, कहीं और से आता है, वो रिस्क है रियल। जो रिस्क दिख रहा है वो तो प्राइस इन है, लेकिन जो रिस्क, जो ऐसी कोई निगेटिव इवेंट्स होती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी सकता है, वो इवेंट पक्के होंगे। वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में कभी न कभी कुछ ना कुछ होगा। सो इट कैन बी पॉलिटिकल रिस्क और एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, ग्लोबल, लोकल, कुछ भी रिस्क हो सकता है, लेकिन दैट कैन डिले द स्टोरी बट नॉट डिले इंडिया स्टोरी. And powerful mantra for making money in the stock market, you need three things: vision, courage, and patience. And patience is the rarest of that. So we are buying the future. We are buying the future. We should be very clear कि भाई आप बाजार में आते हो तो आप भविष्य की तरफ देखें। आपके पास फोरसाइट चाहिए और करेज चाहिए। अब जब आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, सो करेज चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंस चाहिए, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसा होता नहीं। तो जब थोड़ा खराब हो जाता है तब भी आप बैठे, और अच्छा होता है तो आप ऑफकोर्स आपको बैठने का है। सो पेशेंस इज टेस्टेड मैक्सिमम व्हेन थिंग्स आर चैलेंजिंग. सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. Patience is required, and the people who are patient in Indian markets, they have made tons of money. So conclusion, compounding is not intuitive. Long-term compounding needs imagination. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब लंबे समय की बात करते हैं तो आपको ये ऐसे मतलब इंट्यूटिव नहीं होगा कि भाई 25 साल में क्या हो सकता है. जैसे 6 लाख का मेरे बोलने में डर लगता है, लेकिन वो उसके आसपास का नंबर आएगा पक्का 25 साल के बाद देखेंगे तो. Long-term compounding needs imagination. India has a solid compounded past. India is rapidly moving from poverty to prosperity. ये भी एक बात है. आपका जो $2-2.5 का जो कहानी है 25 साल का, वो अब वो पॉवर्टी वाली बात खत्म हो गई है. अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाउ डू दे मैनेज द जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपका 3,000-4,000 का बाद तो $4,000 के पहुंचने के बाद देयर इज अ मैसिव एक्सप्लोजन इन कंजम्पशन. तो ये जो नेक्स्ट 25 years है, वो क्लियरली bulk of that will be prosperity journey, and India is the ultimate next $1 trillion opportunity, adding $1 trillion in GDP in successfully in shorter periods, and that leads to massive discretionary spend. So my suggestion is don't bet against India. Be optimistic, be patient, and you will make in double digits, maybe 10%, 12%, 15% compounded, and you compound this at this rate in double digits for 20-25 years. You sit on massive increase in your purchasing power for all your savings. So that's what our my thought process is. So thank you very much, and we'll take few questions. Thank you, sir. This was amazing, and I'm sure that a lot of people will be taking a lot of lessons from today's presentation. I have been receiving a lot of appreciation for the presentation today already. Thank you all the investors. Thank you all for attending today, and thank you, sir, for the presentation. I'll take few questions right now. Of course, some of your statements were very powerful. Patient gets tested when things are challenging, and I'm sure that in challenging times, right, it may not reflect in markets today, but there is a perception that there is something which is still not right, looking at the global inflation numbers of various economies and the kind of the rate at which the pace at which the rates are being increased. Right? So is India looks insulated as of now, but do you really think that it could be like this going forward, or do we are in for some surprises whatsoever? So, I don't think India is.
as insulated as it is made out to be. It is part of the global village. India will have its own challenges as we go forward, and I'm quite sure India will get impacted if the say one of the things is that don't fight the Fed, and if Fed is fighting the inflation war in US, everybody will be directly indirectly impacted. Like हमारा $100 बिलियन का रिजर्व निकल गया, अभी तो टाइटनिंग चालू है. 100 बिलियन हर महीने करते हैं वो, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते. टाइटनिंग एक्चुअली क्यूटी विल बी क्वांटिटी टाइटनिंग विल हैव फार मोर इम्पैक्ट देन एनीथिंग एल्स. यदि आपको $100 बिलियन और यहाँ से चला गया और रुपया जो 80-81 रुपया से मान लो 85-86 हो गया, 87 हो गया, so that will have a huge impact on our inflation, on import capability and a lot of things, raw materials, fertilizer, सब चीज के लिए. So I would not think that even the FI flows in terms of FDI flow, FI flows, that will also get impacted as we go forward. So there are a lot of ways India can be impacted, and they will be impacted. We are not that completely insulated, particularly in the energy side. Energy side, we are very badly exposed. And now this in the cross war of global geopolitics, I mean, where India and China, they are importing energy from Russia. How the world will see it as we go forward. So a lot of these concerns will come, but India has a solid story, and I get a lot of comfort from the fact that we have still got $500+ billion of reserve. And it's very stable now. In fact, last few weeks we are seeing there is further accretion to the reserve. So that is a kind of thing, and even the inflation is cooling off in US and other parts of the world. So that may bring down the dollar pressure. But till this fight is over from the Fed and they reach their objective of 2, 3, 4% inflation, I think we should be on the guard. Okay. Of course, that was one of the questions that we were getting was the US dollar strengthening and how it would affect India. But I guess you already answered that, because that is one of the major concerns currently from a lot of our investors. So another thing that keeps on coming is that the interest rate hikes that have been affected by our central banker, right, RBI. So do you think that we've reached the peak of the interest rate hike cycle, or is it still expected furthermore? What is your call? I think the pace it is linked to what's happening globally to the commodity prices. If energy prices come down, say like yesterday, day before, they were talking about $82 and all. So if the energy prices cool down to say $70, $75, it will have, with a gap, it will have salutary effect on the inflation. So because we are today's numerator will become denominator. So clearly there will be significant decline in the inflation as we go forward, because world is not allowing any commodities to go out of hand. Now entire global commodities are on the backtrack. I mean, aluminum, your zinc, your oil, everything has seen its peak. Like we just talk about oil. Oil touched $125, $130, and now it is struggling at $85, $87. So that is the extent of decline when you look back 6 months. But what can happen in next 6 months is also a different story altogether. So clearly we are heading not so much to the incremental inflationary situation. We are heading towards more deflationary situation in a relative world. I mean, like inflation, which is 7%, that might come down to 4-5% or something like that. So that is a more deflationary, I would say. And to that extent, I think I would think that dollar has peaked out in terms of DXY. Now, how it plays out for India itself, how well we do, like how do we manage our external trade, how do we see our services exports, because there are a lot of components in India's external trade. I mean, external balance of payments. I mean, you have the merchandise exports, you have services exports, and both are going in different directions. Services are going at 20-25%, whereas merchandise is falling by 10-15%. So, what is going to be the net effect? And then on top of it, FDI, FI flows, remittances. Now, remittances, a very large component comes from these Gulf countries, and they are booming. So, your remittances, which are about 90 billion, that might be 110 billion there. So, I mean, we don't know what will play this thing, but starting with $550 billion of forex reserve, I think we should be fine. But dollar doesn't seem to be big threatening thing for me. Okay.
So one question that keeps on coming when we interact with a lot of our advisors, and that is in regards to the risk of Chinese economy slowing down. How how do you see that as a risk to the entire globe currently, and how could it play out for India? Yeah, so this is first time it will happen in last 15 years, so we don't have memory. Like last 15 years, Chinese, we showed the chart. They have grown at 12% dollar for last 25 years. Yeah, Now, from there to say it will grow at 1 or 2% or not grow at all, forget about decline. I mean, nobody's thinking about decline in China. We are talking about 3%, 4% kind of a growth, even on larger base. That itself is very, kind of a slowing down of the world economy. So, see, China is a better version of India. So they have a lot of consumption of commodity. The main thing is that 50-60% of all the commodities in the world is consumed by them. So if by chance they consume little less, that commodity is finished because it will be flooded to all the markets. So whichever commodity they start exporting in a meaningful way, I think they can, because they will export at marginal cost, and that price could be significantly lower than what we have recently seen for those commodities. So I think it will be deflationary, and it can be devastating for some of the commodities if China seriously slows down. Like steel, they consume of the 2 billion tons, about a billion ton is consumed by China. If by chance it slows down, and they say that we would like to export 100 200 million tons of steel to the world at marginal cost, I mean, you can imagine what can happen to the price of steel. The way it happened in when the Russia collapsed in 1990, and we saw a steel price of $200 HR. okay. Right. So the awakening of the Indian investor in the SIP book. Do you think Ah, this is do you think this is sufficient enough to offset the outflows of FIIs or FPIs? so far, yes. So far, yes. Because, see, we are about 3.5% of the world now in terms of market cap. Right. And my belief is institutional investors have not allocated even a percentage in their portfolio. So, long term, it is a net buy in India. They have to allocate. As India becomes more prominent in the world, they have to allocate. Right now they are saying that other emerging market economies are at single digit P multiple and you are at double digit P multiple, like almost 100% premium. But that's the nature of the beast. I mean, you don't get two houses in the same price. At the same address, you can get one house at double the price. So it's something like that. I think world will get reconciled to India's valuation at some point of time. And Indian corporates also have to deliver the superior earnings growth of about 15-17%. Because if earnings story doesn't happen, then rest all is even Indian retail investors. See, the guys who are coming in, fresh inflow could be there for 15,000. But the one which have come earlier, they can start redeeming. So the net inflow from SIP itself can be negative if the earnings excitement is not there. So I would think the key is corporate earnings growth, which this year they're talking about 12%, next year they're talking about another 12-15%. But can we keep that momentum on? That would be the key to. But coming back to your retail story, जो आपका रिटेल में जो इन्फ्लो आ रहा है 12-15 हज़ार करोड़ का, ये सबसे बड़ा मतलब मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई गोरे आपको ऊपर नहीं जाने देंगे और काले आपको नीचे नहीं जाने देंगे. तो इस टाइप का मतलब वी आर देयर, बट एक्चुअली व्हाट विल डिसाइड इज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स. मतलब 20-22 का पी मल्टीपल में आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगा तो ही जाके आपको जो धक्का मार रहे हैं पीछे से एसआईपी का, दैट विल बिकम इवन बिगर. मतलब आप सोचिए कि अभी 17-18 हज़ार में सब पैसे आए हैं, 25 हज़ार हो जाए तो वो तो पगला जाएगा वो कि भाई मतलब उसको रिटर्न आ जाएगा, मतलब 50% 60% रिटर्न आ जाएगा. तो आई थिंक अ लॉट इज गोना हैपन एंड वी कैन नॉट नो कि भाई अर्निंग्स कैसे चलेगा आगे. Fair enough. I think a lot of questions have already been taken. I think everybody is always interested in knowing one thing: is the market, according to you, current levels fairly priced, underpriced, or overpriced? Very fairly priced, very fairly priced.
20-22 times market this thing, except that composition of earnings बदल रहा है. मतलब commodities का earnings जैसे steel वगैरह का earnings खत्म हो गया है, कम हो गया बहुत, तो जो earnings है वो financial services से आ रहे हैं या बैंक से आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है. Composition is changing and there is a higher quality earnings than what was earlier. मतलब quantum तो जो है वो है 850 रुपये EPS की बात कर रहे हैं इस साल निफ्टी का, तो 850 और 1000. अब वो एनालिस्ट लोग आपको मालूम है जब साल चालू होता है तो 1000 बोलेंगे, पहला क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो 970, दूसरा क्वार्टर रिजल्ट आएगा 950. तो ये चीज़ डिफीट होना जरूरी है कि भाई आप जो अर्निंग्स ग्रोथ का जो साइकिल है 12-15% का वो चालू है, तो देयर इज नो डर था बायर्स एंड इवन FIs. सी एक खास बात क्या है कि रिटेल जो है ना स्ट्रक्चरल है, वेयर एज FI सिक्लिकल, वो अपॉर्चुनिस्टिक है, तो वो ऑफ एंड ऑन आते रहेंगे. लेकिन नेट मुझे लगता है आप यदि 5 साल का होराइजन ले तो नेट उनको खरीदना ही पड़ेगा इंडिया में, और आपका अगले 5 साल तक रिटेल तो खरीदेगा. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अच्छा कंपनी, अच्छा सेक्टर, इट विल गो टू द रूफ. तो अगले 5 साल के इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से मार्केट को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्टेशन आप कम रखिए. सी एक्सपेक्टेशन कम रखे आप, क्योंकि वैल्यूएशन में ऐसा कोई 8-10 का पी में नहीं खरीद रहे आप, पिटा हुआ मार्केट नहीं है, ये फुल ऑल टाइम हाई में खरीद रहे हैं आप. तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखने का, वही जितना अर्निंग्स आएगा उतना ही आई वुड एक्सपेक्ट से 10 से 12% अर्निंग्स आएगा, वो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा. अब उसके ऊपर 15 आ जाए 17 आ जाए वो लॉटरी है. जी सर, एक सवाल रहता है सर. there has been a very good returns in small cap funds and mid cap funds. So I'm sure that market as a whole you did put in a lot of clarification, but where do you see the smaller set of companies growing in, for somebody who is a 5-year or 10-year investor? 10 years I'm sure is a little no-brainer, but for a 5-year investor, because a lot of past return looks very promising as of now. लेकिन देखिए एक्चुअली में कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन बहुत सारे मिड कैप कंपनीज लेड बाय IT, जब IT बूम आया 2 साल पहले जो कोविड के चलते, उसमें क्या हुआ, TCS इन्फोसिस तो से 50% बढ़े, लेकिन जो मिड साइज कंपनी थे वो 5-5 गुना हो गए. बिकॉज हुआ क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग वहां पर हुआ. नोबडी वांटेड टू बाय TCS, एवरीबडी वेंट एंड बॉट सम अदर नेम. और वहां पर जो कोई PMS मैनेजर है, किसी ने जाके उसको, मतलब लिमिटेड सप्लाई था, लोगों ने खरीद लिया पूरा. तो वो एक जो एक्सेस वैल्यूएशन हुआ था कई बार. मिड साइज में एक्साइटमेंट बहुत है कि भाई आपका अर्निंग्स ग्रोथ है 25%, 30%. अभी बैंक्स आएंगे जो ग्रो होंगे, छोटे छोटे बैंक्स. लेकिन होता क्या है कि इनका जो वैल्यूएशन जो है दैट शुड बी अंडर कंट्रोल. कि भाई यदि आप 50, 60, 70 का पी कर दिए तो आपको पिटाई होने वाली है. तो आप जब आप मिड कैप देख रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट एक्जेक्टली इज द वैल्यूएशन लेवल एट विच यू आर एंटरिंग इन. अदरवाइज रिवर्जन टू मीन होएगा. आपका लार्ज कैप माइट डू बेटर देन मिड कैप्स एज द मिड कैप गेट्स इनटू करेक्टिव मोड. सो ये है, मतलब यू कांट ब्रश एवरीथिंग विद द सेम काइंड ऑफ थिंग. इट डिपेंड्स. जैसे बैंकिंग में भी आई थिंक जो स्मॉलर फाइनेंस कंपनी है, बैंक्स हैं, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, दे हैव नॉट बीन रिलेटेड. तो वो जैसे जैसे आपको क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होगा, आई थिंक अगेन सेम थिंग इज गोना हैपन. मतलब जो बड़े बैंक्स हैं उससे छोटे बैंक्स कहीं आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़े बैंक्स 12-15% ग्रोथ करेंगे, छोटे बैंक्स जो है ना हो सकता है 25-30% भी ग्रो कर ले. एंड दैट डिफरेंशियल will tell in the marketplace. Right, sir. Thank you very much for a very fantastic and insightful session. It's always been great interacting with you at NJ, and I'm sure that all our investors are going to be a lot benefited and with a lot of doubts cleared. And going forward, I'm sure that their investment journey will be very smooth and more relaxing after this talk. Right? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for joining us today. Namaste.